Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like You are watching Black Mountain Moto vlog. Please like and subscribe to our channel and don't forget to share. हे गाइस नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम लोग कवर करने के लिए आए हैं कैपिटल मॉल को, जो कि हमारा नालासोपारा ईस्ट में पड़ता है। और ये मॉल काफ़ी इजी टू एक्सेस है। यदि आप नालासोपारा स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ से आपको ईस्ट में आना है, और बाकी आने के बाद में आपको ऑटो शेयरिंग ऑटो को मिल जाएगा। स्टेशन से करीब इसकी दूरी जो है करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का होगा। तो यदि आप पैदल भी आना चाहते हैं तो 10 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। तो ये मॉल काफ़ी बड़ा है और ये पिछले साल ही ओपन हुआ है। तो चूँकि मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, बल्कि हमारे कुछ लोगों ने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे नए साल के लेके इस मॉल को काफ़ी डेकोरेशन किया जा रहा है, तो आप जाएं और उसको ऊपर वीडियो बना के अपलोड करें। तो मैं फ़िलहाल उसी को कवर करने के लिए आया हूँ। ये मॉल काफ़ी बड़ा है और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, और यदि आप अपने फैमिली के साथ में आते हैं और आपके साथ में बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से मैं इस प्लेस को रिकमेंड करना चाहूँगा। बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ में, और वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेके चलता हूँ मॉल के अंदर में, और देखते हैं कि अंदर में किस तरह के शॉप है। मेरे ख्याल से मैंने जैसे देखा है यहाँ पे जितने भी ब्रांडेड कंपनी है, सब ब्रांडेड कंपनी के आपको शॉप मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं एक एक फ्लोर पे और सबको एक्सप्लोर करते हैं, और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कि मॉल अंदर से दिखता क्या है और किस तरह के शॉप अंदर में है और किस तरह के फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में।
are watching Black Mountain Moto Vlog. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. तो काफ़ी समय हो चुके हैं और मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट मॉल के अंदर जो ना सारे एरिया को कवर कर लिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मॉल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो देखने के बाद में आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्द मिलता हूं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।